अब ये जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बारे में काफी बड़ा थियोरी पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव होंगे, और ये टॉपिक ऐसा है जिसमें से JEE रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं। तो इफ यू रिमेम्बर हाउ टू डिराइव वैल्यूज, अगर आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला क्यों आया, कैसे आया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स व्हाट? In a normal condition, when I throw a ball, for example, if I throw this pen in the air, so definitely it's with common sense you can say that कि ये पेन एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। Suppose if you think about when you shoot the arrow in the air, so if you just shoot that arrow with some angle theta, तो एक हाइट तक जाएगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। If you think about bombardment, मतलब क्या? तो कि अगर कोई बॉम्ब है वो फेंका जा रहा है तो उसका जो सिलेंडर होता है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे रखा जाता है। अगर मान लो वो हॉरिजॉन्टल रखते तो क्या होता? तो कि वो जो बॉम्ब है वो जो भी डिसाइडेड टारगेट है वहां पे नहीं गिरता और उससे पहले कहीं पे वो गिर जाता, वहां कहीं पे वो फूट जाता। सो हियर इट शोज दैट द प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स व्हेन वी थ्रो अ बॉडी इन अ ग्रेविटेशन फील्ड with constant horizontal velocity and constant vertical acceleration. So that kind of motion is considered as projectile motion. So here they mention it, the object thrown in the gravitational field of earth moves with constant horizontal velocity, जो अभी मैंने बताया, and constant vertical acceleration. अब ये क्या बताता है? तो कि constant vertical acceleration means what? तो कि अगर हम उसको ग्रेविटेशन फील्ड में डाल रहे हैं और अगर वो एयर में है तो इट मीन्स एट ऑल द पॉइंट्स दैट पार्टिकल परफॉर्म और दैट पार्टिकल हैव अ सेम एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्विवेलेंट टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसलिए बताया गया है सच टू डायमेंशनल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। सपोज इफ यू थिंक अबाउट दैट जावलिंग, ओके, सो अगर मान लो क्या वो जावलिंग थ्रो कर रहे हो, सो व्हेन दैट इज थ्रो इन एयर, सो दैट इज समथिंग लाइक दिस। मान लो कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सपोज इफ वी थ्रो अ बॉल फ्रॉम दिस पॉइंट दैट आई कंसिडर एज अ ओरिजिन, सो व्हेन यू थ्रो द बॉल इन द एयर दैट विल अचीव सम मैक्सिमम हाइट एंड देन दैट विल रीच एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि अगर मान लो किसी पार्टिकल को यहाँ पे थ्रो किया जा रहा है, so at that point in the tangential direction it has some initial velocity v0 and that will make some angle here is theta 0, means you can consider as a initial angle theta, that's a theta 0. That v0 that will resolve in a two component, so definitely you can say that there is an initial velocity x component, initial velocity x component that is equals to v0 cos theta 0. Again you can say that जिसने बनाया theta वो बनेगा cos theta, and the another one that is initial velocity in y direction component that is a v0 sin theta 0. तो इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। Now what? At this point it's started, तो मतलब x भी 0 है, y0 भी 0 है, x0 भी 0, y0 भी 0, means it is about initial position. Now here if I want to think about कि मैंने ऊपर डेफिनेशन में ऐसा बताया constant horizontal velocity and constant vertical acceleration. So here as you throw a body in an upward direction means that is against gravity and it is about only vertical direction, तो हमें सिर्फ मिलेगा acceleration का y component that is against gravity, इसलिए आएगा minus and that is equivalent to gravitational acceleration g. So ay is equals to minus g j cap. तो उसका मतलब होता है acceleration in y direction which is equivalent to g value. Okay, with minus sign it shows that acceleration that is in a downward direction, but the body that we throw in upward direction. So this acceleration exert in downward direction. Now here
कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, ओके, सो आई से अगेन इट, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम ऐसा कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ax इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारे पास ax भी आ गया, ay भी आ गया, एज वेल एज v0x और v0y भी था। With the help of x0, y0, ax, ay as well as v0x and v0y, here we can discuss so many formula. First of all, velocity formula. That velocity basic formula is v equal to v0 plus at. But if I take it's a vector form. Now if I think about in terms of a component, so final velocity x component v0x plus axt and vy means v0y plus ayt. So now initial velocity v0x. So from equation number 1 it mentioned v0x, that is equal to v0 cos theta 0. So here I can say vx equal to v0 cos theta 0 and here v0 cos theta 0, v is equal to u plus at. So here v is equal to v0 plus at formula, if final velocity is equal to v0 cos theta 0, acceleration in y direction, that is a 0. Now here I can also think about it velocity in y direction. So velocity in y direction, initial velocity in y direction, that is a v0 sin theta 0. Acceleration in y direction, that is a minus g. So here minus and that t, that remains as it is v0 sin theta 0 minus gt. Combinedly I can say that equation number, ये था number 3. And now you can also think about that displacement value. So displacement from that r equal to r0 v0t plus half at square. So from that x equal to x0 v0xt plus half at square. So x as it is, that we want to find out. Position x0 is initial position, that's a 0. Acceleration I can also matter here ax. The acceleration in x direction is also 0. So here I have x is equals to v0xt. So from that x equal to, I can say that v0 cos theta 0 into t. Is that clear? Now same way we can think about y equal to v0 plus v0y t plus half ayt square, v0y plus v0yt plus half ayt square. Again we can say that y0 is 0. Initial velocity in y direction, v0 sin theta 0 into t, half ay, acceleration in y direction, that is equal to minus g. So minus half gt square. So here you have a x position as well as y position, that is equation number 4. This is equation number 5. Now from equation 4 and 5 we can also think about it, what will be the trajectory of that projectile object. Okay, so now from equation 4 and 5 we can think about equation of trajectory of projectile motion. Equation of trajectory of projectile motion from equation 4. From equation 4 you can make t as a subject. So x is equal to, t is equals to x upon v0 cos theta 0. So here if you know that cos theta, you can find out time period. Now substitute this value in equation 5. Equation 5, which is about y equal to v0, y equal to v0 sin theta 0 into t, but t is equals to x upon
V0 cos theta 0 minus half gt square. So minus half g t square, it means x square upon V0 square cos square theta 0. So here that V0 will cut, sin square theta 0 into x minus g upon 2V0 square cos square theta 0 into x square. So this equation is equivalent to y is equals to ax minus bx square. When that equation y is equals to ax minus bx square, this equation for parabolic path. So projectile motion will perform parabolic path. But here it shows that as time goes on increasing, as particle moving in a straight direction, at all the points, the component of velocity, this is a component of initial velocity. Now, velocity in cos direction. At this point, V0 sin theta 0 in this direction and V0 cos theta 0, that is in this direction. मतलब यहाँ पे आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे, but on the top it has only horizontal component, and that is equivalent to V0 sin theta 0, and at that point no component for horizontal direction, and as you going in downward direction तो धीरे धीरे उसका वैल्यू है वो कम भी होता जाएगा. So now here first we can say what is the time to achieve maximum height. मतलब क्या, तो कि मान लो कि ये maximum height h है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो मैक्सिमम रेंज है. सो हियर आई कैन से दैट टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट, मतलब क्या, तो कि उतना टाइम जहां पे मैक्सिमम हाइट का वैल्यू हमें मिल सकता है. सो हियर यू हैव टू ऑब्जर्व दैट h मीन्स y डायरेक्शन इक्वेशन एंड रेंज मीन्स x डायरेक्शन इक्वेशन. तो आपके पास x डायरेक्शन का इक्वेशन तो है ही, दैट x डायरेक्शन इक्वेशन x इज इक्वल टू v0 cos theta 0 into t, that's the position. But here velocity in y direction, that's the v0 sin theta 0 minus gt. So now here it shows that on the top, okay, listen carefully. So first point is that time taken to achieve maximum height. So time taken to maximum height, it means here we can say that at maximum height, at max height, velocity in y direction, that's the 0. So velocity in y direction 0, and velocity y direction का formula है v0 sin theta 0 minus gt. Here you can say that velocity in y direction 0. So v is equal to v0 plus at, v0 sin theta 0 minus gt, and vy now take a 0. So that t is equals to tm. Okay, time taken to achieve maximum height, m stand for maximum. तो v0 0 हो गया, v0 sin theta 0 and minus gtm. So minus g go that side. So here take this t as a tm. So tm is equal to v0 sin theta 0 upon g. That is equation number 5, and now this is 6. So maximum time to achieve this maximum height, that tm value is v0 sin theta 0 upon g. Now here second point I can say that is a time of flight, मतलब कितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल है वो हवा में रहेगा. So here from this figure you can say that whatever the time taken to achieve this maximum height, same time it will take to reach at the ground. मतलब जितने टाइम में वो ऊपर जाएगा उतने टाइम में वो नीचे आएगा. So in a simple terms I can say that time of light that is equivalent to twice tm. थोड़ा टेक्स्ट बुक से हमने अलग लिया हुआ है पर मतलब तो एक ही हो रहा है. So time of flight it's a double than maximum time. So 2 v0
sin theta 0 upon g, that is a time of flight. Now for the third point, तो मैक्सिमम टाइम से हम जहां पहुंचेंगे वो होगा मैक्सिमम हाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट से हम जहां पहुंचेंगे उसको कहेंगे हम रेंज. बट देयर यू टू बी वेरी केयरफुल. हाइट मीन्स दैट इज इन a y डायरेक्शन एंड रेंज मीन्स दैट इज इन a x डायरेक्शन. तो हाइट के लिए y का इक्वेशन यूज करना है और रेंज के लिए x का इक्वेशन यूज करना है. सो हियर थर्ड पॉइंट इज दैट मैक्सिमम हाइट, दैट इज a कैपिटल H. मतलब y का जो आपके पास इक्वेशन है, कौन सा वाला इक्वेशन? हियर यू कैन से दैट y इक्वेशन, this one. So that equation number 5, y is equal to v0 sin theta 0 t minus half gt square. तो ये जो इक्वेशन है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो v0 sin theta 0 into t minus half gt square. तो ये इक्वेशन में जहां पे y है वहां पे h ले लो, और जहां पे t है वहां पे tm ले लो, और जबकि tm का वैल्यू है v0 sin theta 0 by g. So now total height value is equals to v0 sin theta 0. That maximum time is v0 sin theta 0 upon g minus half g t square. So it means it is a v0 square sin square theta 0 upon g square. So here that 1g will cut. So what will remain here? Here it becomes, that is h is equal to v0 square sin square theta 0 upon g minus half v0 square sin square theta 0 upon g. Means this is a one value minus half value. So here you can see that half will remain. So maximum height formula is v0 square sin square theta 0 upon 2g. That is also one of the important formula, that maximum height for a projectile v0 square sin square theta 0 upon 2g. That you can say it's equation number दे दे तो ये है इक्वेशन नंबर 6, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वेशन नंबर 7, एंड मैक्सिमम हाइट, दैट इज इक्वेशन नंबर 8. Now, next point, that is about, after 3, now there is a fourth point, that is about range, means R. तो रेंज में हमें x का वैल्यू यूज करना है. तो x का वैल्यू क्या होता है? तो कि x का वैल्यू जो है वो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में लिया था. x is equal to v0 cos theta 0 into t. तो x is equal to v0 cos theta 0 into t में जहां पे x है वहां पे r ले लो, जहां पे t है वहां पे tf ले लो, and the tf value is twice v0 sin theta 0 upon g. So range formula that becomes r equal to v0 cos theta 0 to v0 sin theta 0 upon g. Here you have to use one of the maths identity, that is r. If you found it, v0 into v0, that is a v0 square, then 2 sin theta into cos theta will be there. तो हम यहां पे ऐसा लिखेंगे, that is a v0 square 2 sin theta 0 into cos theta 0 upon g. अगर मैथ्स में आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है तो आई थिंक यू नो दैट आइडेंटिटी, दैट इज ए 2 sin theta 0 into cos theta 0, that is equals to sin 2 theta हम कह सकते हैं. तो रेंज का फॉर्मूला बन जाता है v0 square sin 2 theta 0 upon g. And now next point, it's about for a maximum range. मतलब कहां तक वो जा सकता है. तो साइन मैक्सिमम कब बन सकता है? तो कि साइन मैक्सिमम एट 90. So here I can say that for a maximum range, if I take theta 0 is 45 degree, तो maximum range R max बनेगा v0 square sin 45 upon g.
तो वो बन जाएगा V0² by G. So as arrange this formula, that is equation number 9, and maximum range formula V0² by G. So here projectile is very important point. हो सके उतना इसका रिवीजन करते रहिएगा तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा.